So this is another measure of central tendency. So we have done arithmetic mean, we have done harmonic mean, we have done median, we have done mode, right? So this one, last one is the geometric mean, right? So generally this is something which we already have done in a class, right? So geometric mean, say you have n identities, x1, x2, so on up to xn. Then we know what is their geometric mean. So geometric mean is what? Geometric mean is the product of all these entries. So x1, x2, so on up to xn. And if you see these are n quantities, so we will take the nth root. Remember, beta, is it fine? Yes, ma'am. Right? And in case you have the data as x1 with frequency f1, x2 with frequency f2, and so on up to xn with frequency fn. तो बेटा ये यही केस हो गया, से आपके पास ऐसा डाटा है, so 2 2 3 5 2 3 5. So if I calculate geometric mean, so geometric mean is what? Geometric mean is the product of all the entries. So if you will see, so when you will multiply, 2 will come 3 times, 3 will come 2 times, and 5 will come 2 times. So then to the power 1 by n, n means the total number of entries. So here if you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are total 7 entries. Beta, yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you see in this case, what this formula will become, so what is geometric mean? So geometric mean will be x1, its frequency, x2 to the power its frequency, xn to the power its frequency, and obviously what here it will come, here it will have 1 by capital N. So where what is capital N? Capital N is sum of all the frequencies. But is it fine? So basic concept remains the same. Only thing is कि frequency आ जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास powers आ जाएगी. वो power सिर्फ इसलिए हो रही है because multiply करोगे तो इतनी बार multiply होगा ही. Yes. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this we all, so in case अगर आपको इसको calculate करना है mathematically, so what you can do is you can take log, right? Otherwise simple calculations हैं, we can calculate it in this way. Otherwise he is just telling you how to calculate. So हमें पता है G का formula क्या बना था? What was geometric mean in general? So this was x1 f1, x2 f2, so on up to xn fn whole to the power 1 by n. So obviously जब nth root आ जाता है तो it is always suggestible that you take log on both the sides. So what will be log g? Log g, so power comes down, so this will be 1 by n, right? So again we know what is log of a into b. What is log of a into b? So अंदर आप देखो सारी multiply हो रहे हैं, तो log of a into b क्या होता है? Log of a plus log of b. Yes, log of b plus, राइट अब अगर आप देखो इन सब की फ्रीक्वेंसीज भी थी ऊपर, सो x1 f1 हमें पता है जब हम लॉग लेते हैं तो पावर नीचे आ जाती है, सो f1 log x1, f2 log x2, this is and fn log xn. So ultimately, so now this quantity is easy to calculate. So moment you have calculated this quantity, we just take the anti-log, you just take the anti-log, and we will get the value of g. So this is just, you know, he is just telling how to calculate this value. Otherwise, you know how to calculate this. We can use the calculators. Nowadays, scientific calculators are there. We can calculate these values. But is it fine? Yes, ma'am. So if you see the very first property of geometric mean is the same. So the log of the geometric mean is the arithmetic mean of the logs of the given values. So you see हमने जब log लिया हमारे पास ये relation बन गया, log of g is what? 1 by n f1 log x1 plus f2 log x2 plus so on up to fn log xn. ये relation हमने अभी बनाया था. तो अगर आप ये देखो, यहाँ से देखो आपकी अगर क्वांटिटीज हैं log x1, अगर मैं x1 ना मान के क्वांटिटीज ले लूं log x1 log x2 log xn, तो आप क्या कर रहे हो, log x1 को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, so f1 into log x1, log x2 को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, so f2 into log x2 and so on up to
fn into log xn. तो एक तरह से क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज विद देयर फ्रीक्वेंसीज, आप उनको ऐड कर रहे हो और फिर आप उसको डिवाइड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से. सो यू सी दिस इज नथिंग बट द एवरेज. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. अभी ठीक आ रही है बेटा? इज इट फाइन नाउ? यस मैम. ओके बेटा, वो बीच में हल्का सा थोड़ा कई बार ना फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाता है, सो मे बी दिस इज द रीजन. सो ये सी मतलब, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि log g इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन ऑफ log ऑफ द गिवन वैल्यूज. बेटा इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर? यस मैम. So I mean these properties are very trivial. I mean we can just consider them as such only. So what this property 2 says, you need not learn these properties, but if it comes, you should know how to see them. So if n1 and n2 are the sizes, g1 and g2 are the geometric mean of combined. So there are two series. एक series का size n1 है और उसका geometric mean g1 है. दूसरी series है, उसका size n2 है और उसका geometric mean g2 है. So then he is saying that the combined geometric mean is given by this formula. So we just have to apply the definition. So we just have to apply the definition. Say suppose the first series. Say suppose the first series have these one elements x1, x11, x12, so on x1 n1, and this is second series has these elements x21, x22, so on up to x2 n2. So we know what will be g1. What will be g1? What will be g1? G1 will be x11, x12, so on up to x1 n1 whole to the power 1 by n1. और अगर आप log ले लोगे तो क्या बन जाएगा, बिकॉज हमें रिलेशन में log दिखता है, तो log ऑफ g1 कितना बन जाएगा, 1 by n1 नीचे आ जाएगा और ये जो अंदर सारी क्वांटिटीज है उनका सम हो जाएगा. सो log ऑफ x1 I is going from 1 to n1. बेटा इज इट क्लियर? बच्चे क्लियर है? सिमिलरली अगर आप सेकंड सीरीज लोगे तो उसका ज्योमेट्रिक मीन के साथ जब log ले लोगे यू विल गेट दिस रिलेशनशिप. Now let us go to the combined series. अब combined series में कौन कौन सी टर्म्स आ गई, x11, x12, x1n1, फिर x21, x22, x2n2. तो अगर मैं इसका combined geometric mean निकालूं तो वो क्या बन जाएगा, g कितना हो जाएगा, what will be g? G will be product of all the quantities to the power total quantities, so 1 over n1 n2. Again let us take log on both the sides. So log g क्या हो जाएगा, 1 over n1 n2 नीचे आ जाएगा और इन सारी quantities का sum बन जाएगा. So log of x1i plus log of x2j. So I is from 1 to n1, j is from 1 to n. So just put the values of log of x1i summation from the above equation, from this equation number 1. तो यहाँ से log of x1i summation की वैल्यू कितनी हो गई, n1 log g1. Similarly n2 log g2. So that's it, we get the formula. Beta, is it clear? Right, if you see next property, if g is the geometric mean of x1, x2, so on up to xn, then the geometric mean of the inverse quantities is 1 by x1, then the geometric mean of the inverse observations 1 by x1, 1 by x2, so on up to 1 by xn is 1 by g. So proof is very, very easy. So by definition, what is g? G is x1, x2, so on up to xn whole to the power 1 by n. So what we will now, we want the inverse quantities, right? What we want to find the relationship between the inverse quantities. Suppose कर लो जो inverse quantities हैं 1 by x1, 1 by x2, so on up to 1 by xn. Obviously इनका geometric mean क्या हो जाएगा, quantities 1 by x1 है, 1 by x2 है, 1 by xn है, but total number इनका n ही है. The count is n only, so 1 by n. Let us say this number is g dash. So you see what is this? So this can be written as g dash over 1 upon. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1, x2, so on up to xn. So this is nothing but nth power. But denominator क्या बन गया? This is 1 by g. So they are reciprocal of each other. But is it fine?
Beta, is it clear? Yes, ma'am. Right? So now again, Yes, merits, if you see, this is easy to calculate. It is rigidly defined. Rigidly defined means it does not changes, मतलब बहुत solid चीज है. It does not changes easily. It is based upon all the observations, right? And some demerits are again, अगर quantities ज़्यादा हो जाएंगी because इसमें log involve हो गया, फिर anti log involve हो गया, so the calculation is very much complicated. दूसरा, अगर एक भी quantity zero हो गई, right, then the whole of the geometric mean will become zero, right? अगर फिर से अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो या तो अंडर रूट आ गया है, तो इसलिए हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालना मुश्किल हो जाएगा. बेटा, इज इट फाइन? गर्ल्स क्लियर है? सो प्लीज इन टॉपिक्स में बहुत टिपिकल सिंपल जैसे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ अभी के लिए. जस्ट यू हैव टू डू दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. डोंट गो फॉर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस. सो इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? अच्छा, आप मुझे पहले एक और चीज बताओ. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बुक? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बुक? So can anybody tell me what was the movement? What was movement? What was the rth movement? Remember, what was rth movement? What was the rth movement? What was the कल तो किया है हमने. What was the rth movement about the mean or any other point? Yes, ma'am. Ma'am, rth moment is equals to mu r is equals to 1 upon n summation fi into xi minus Yes. xi minus x bar whole power r, where r can be So 0, 1, 2, so on. So you see, बेटा प्लीज, जब मैं बोल रही हूँ movements, जैसे ही मैंने बोला movements, आपके दिमाग में कौन सा रिलेशन आना चाहिए? आपके दिमाग में ये रिलेशन आना चाहिए, mu r. So mu r is what? If you remember, so this was 1 by n summation fi xi minus x bar to the power r. यही था बेटा? Yes, ma'am. This is what? This is rth moment about mean. तो कल आपको मैंने बताया था एक और mu r dash. So mu r dash is what? This is 1 by n summation I is from 1 to n fi xi minus a to the power r. What is this? Rth moment about A. any About point. A. About Any any point. point x is equal to a. So this वहां पे it's mean. So if I ask you what is this, can you tell me what is this? What will be this in this case? ये क्या बना फिर? What is this quantity? Ma'am, rth moment about origin. Very good. So you see, इसमें हमने क्या किया है? हमने a को 0 ले लिया. इसमें हमने a को 0 ले लिया. So a can be 1, a can be 2, a can be any damn number. So here I have taken a as 0. So today in this article, we will try to see the relationship between mu r and mu r dash. Means अगर आपने rth moment about और mean निकाल लिया है और आपने rth moment about any point निकाल लिया है, so कैसे एक दूसरे की help से you can find the other value. Beta, is it fine? So is the main idea of today's article clear? Yes, ma'am. So shall I start? Yes, ma'am. So you see, this is the relationship between the moments about the mean and about any point. So this definition you already know. So mu r is what? 1 by n summation fi xi minus x bar to the power r, and mu r dash is what? 1 by n summation fi xi minus a to the power r. तो हमें mu r और mu r dash में relation निकालना है. Now mu r was what? Mu r is 1 by n summation I is from 1 to n fi xi minus x bar to the power r. ठीक है? तो हमने क्या किया? इस रिलेशन में a को ऐड कर दिया और a को सब्ट्रैक्ट कर दिया. So what we did, we just added a and we just subtracted a. So you see minus a plus a. So हमने इक्वेशन की स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो नाउ अगर आपको याद हो, जब एज्यूम्ड मीन वाला मेथड था, हम यही करते थे, हम हर क्वांटिटी में से ए एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते थे, सो xi माइनस ए, और उसको हमने नाम दिया था di. यस, Yes, ma'am. तो सिर्फ Yes. वही नेम हमने यहाँ यूज किया है, बार बार xi माइनस ए को लिखने की बजाय हमने xi माइनस ए की जगह di लिख दिया. सो व्हाट म्यू आर बिकम्स, सो 1 by n समेशन fi di प्लस a माइनस x bar to the power r. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो हमें पता है कि जब हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करते हैं, जब हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करते हैं, तो हमारे x बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बार इज a प्लस 1 by n समेशन fi di. बेटा रिमेंबर गर्ल्स, याद है? Yes, मतलब yes. हम जब एज्यूम मीन a ले लेते हैं, तो एज्यूम यहाँ पे आपने a को ही आपने एज्यूम मीन ले लिया है, तो ऑब्वियसली x बार क्या हो जाएगा, x बार विल बी a प्लस 1 by n समेशन fi di. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. Okay, if this is clear, let us move forward. So now again let us, now what will be mu1 dash, what will be mu1 dash? So mu1 dash क्या हो गया, first movement about a, तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, so mu1 dash r is 1. So you see what this will become, 1 by n summation fi xi minus a to the power r नहीं आई, because ये mu1 dash है, तो हमने r1 ले लिया. But xi minus a की वैल्यू हमने कितनी दी है, xi minus a is di. So what this will become, so 1 by n summation fi di. बेटा यहाँ तक क्लियर है? So 1 by n summation fi di की वैल्यू कितनी हो गई, mu1 dash. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. now I'm using this relation again, जो हमने x bar वाला लिखा था, तो अगर आप देखो x bar कितना था, x bar was a plus 1 by n summation fi di, और 1 by n summation fi di की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है, mu1 dash. So यहाँ से क्या आ गया, so finally what we get, x bar is equal to a plus mu1 dash. Is it fine? So x bar is equal to a plus mu1 dash. बेटा क्लियर है? बस we are done with the relationship. बेटा क्लियर है सबको यहाँ तक? तो यहाँ से a minus x bar की वैल्यू कितनी आ गई? What is the value of a minus x bar? What is the value of a मैम minus? आप वो आ गई माइनस की, Minus mu1 dash. Minus mu1 dash. बेटा क्लियर है? That's it. So we are done with the relationship. So what we will do? हमने ये ऊपर relationship लिखा था, mu r is equal to 1 by n summation fi di plus a minus x bar to the power r. अब ये जो a minus x bar है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है. a minus x bar की वैल्यू कितनी हो गई, minus mu1 dash. तो अगर मैं इस रिलेशनशिप में पुट कर दूं, so what I get, mu r is equal to 1 by n summation fi into di minus mu1 dash to the power r. So that's it. So now what I will do, I will just open this bracket. ये जो bracket है di minus mu1 dash to the power r, इसको binomial series से open कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, so 1 by n summation fi. So हमें पता है binomial क्या होता है, nc0. so यहाँ पे n की जगह r है, so rc0, right, into first term. First term is what? Remember बेटा binomial series क्या होती है? What is binomial series? If what so what is this binomial expansion? X plus a to the power n. याद है x binomial क्या होती है? क्या हो जाएगी बेटा? मैम nc0. तो you see जो पावर होती है nc0 x to the power n, तो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n, फिर कब होता है, फिर nc1 x to the power n minus 1, पावर कब होती जाएगी, और ये देखो टोटल, अगर आप देखो x की पावर यहाँ कितनी है, n minus 1, a की पावर आ गई 1, तो अगर मैं दोनों पावर्स को ऐड करूं तो टोटल पावर इज 1 ओनली. Total power is n only. So now next term will be what, nc2 x की पावर और कम हो जाएगी, n minus 2 a की पावर 2, again nc3 x to the power n minus 3
a to the power 3 एंड ऐसे ही अगर हम चलते जाएं लास्ट में क्या हो जाएगा NCN x की तो पावर 0 हो जाएगी और a की पावर n। बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर आप यहाँ पे Yes, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ब्रैकेट क्या थी di माइनस μ1 डैश टू द पावर r। तो अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो क्या बनेगी फटाफट बताओ। सो n की जगह r है, सो RC0 di टू द पावर r और नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस साइन साथ में ले लेते हैं μ1 डैश ऑब्वियसली इसकी पावर 0। टोटल पावर शुड रिमेन r, टोटल पावर शुड रिमेन r। तो di की पावर r हो गई तो नेक्स्ट टर्म की पावर 0 हो जाएगी। बेटा इज इट क्लियर? Then RC1. RC1 di टू द पावर r माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा माइनस μ1 डैश टू द पावर 1। बेटा क्लियर है? R minus 1. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा RC2 di टू द पावर r माइनस 2 माइनस μ1 डैश टू द पावर 2 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा RCR di टू द पावर 0 एंड माइनस μ1 डैश टू द पावर। बेटा क्लियर है सबको? गर्ल्स इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो इफ यू सी यहाँ पे यही लिखा हुआ, Yes, ma'am. यहाँ पे यही लिखा हुआ। So that's it. We are just putting the values now. So what is mu r, right? What is mu r, right? So we will have, if you see, अब अगर आप देखो ये सारी जो terms हैं, if you see this whole terms, so di, right? So if you see these whole terms, these di's are all the values. So if you now let us come to the very first term. So 1 by, let us open the brackets now one by one. So 1 by n, first term क्या बन जाएगी 1 by n summation fi di to the power r। बेटा yes or no? Yes, ma'am. So let me, I'll just take one more minute. Let me do it here from here only. So अगर अब आप देखो यहाँ पे so अब आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या है 1 by n summation fi, यही है ना बेटा बाहर। so you have 1 by n summation fi। बेटा इज इट क्लियर? लास्ट तक यही है। so हम क्या कर रहे हैं अब, so this is mu r, let us open this bracket। so what you will get 1 by n summation fi, हमें पता है RC0 is always, what is NC0, what is the value of NC0? NC0 is 1, 1. right? So यहाँ पे क्या आ गया RC0 आ गया, so RC0 is 1। बेटा प्लीज जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस, अगर आपको याद नहीं है, इन जनरल NCR कितना होता है बेटा? व्हाट इज NCR? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? व्हाट इज NCR? n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल and what you will have n minus r factorial, remember? n factorial, r factorial, नीचे n minus r factorial। तो अगर मैं आपसे पूछूं what is NC0, तो n factorial, r factorial, यहाँ पे r is 0, so 0 factorial and n minus 0 factorial। if you see 0 factorial is 1, ऊपर भी n factorial, नीचे भी n factorial, तो कितना बन गया 1। तो हमने उसकी वैल्यू 1 डाल दी, तो क्या बच गया समेशन fi और साथ में क्या आ गया di टू द पावर r। अगेन अगर आप यहाँ देखो दिस इज माइनस μ1 डैश टू द पावर 0, so anything raised to power 0 is, anything raised to power 0 is 1। then next term is again RC1 है next term में, and हमें पता है what is, if you अगर as a mathematician you should always remember this, NC0 is 1, NC1 इसी वे से जब आप इवेल्युएट करोगे NC1 आ जाएगा n, NCn कितना होता है again 1, reason being I'll tell you NCR
NCR is always equal to NCN minus R. ये याद आया? NCR is always equal to NCN minus R. प्रूफ दिखा इसका या नहीं दिखा? प्रूफ दिखा या नहीं दिखा? NCR is equal to NCN minus R. Can you help me with the definition? What will be the value of NCN minus R? What is the value of NCN minus R? अगर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल. तो r वो होता है जो नीचे होता है, तो यहाँ पे r की जगह क्या है? n माइनस आर. सो n माइनस आर फैक्टोरियल. और फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाती है? n माइनस आर. और यहाँ पे r की जगह क्या है? n माइनस आर. गर्ल्स यस और नो? Yes. So you see, ऊपर क्या बन गया? n फैक्टोरियल. नीचे क्या बन गया? n माइनस आर फैक्टोरियल. और इधर अगर आप देखो n माइनस n, so n will cancel, so this will be r factorial. So n factorial, r factorial, n minus r factorial. So you see, this is nothing but NC. Beta, is it clear? Yes, ma'am. So I'll stop here. तो ये जो last step है हम कल करेंगे. Time is up. Okay बच्चे?